Is Ashish Bhargav, and I welcome each and everyone here for daily news and analysis session. So, कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. Before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible? Okay. So dear friend, this is very important to understand the importance of newspaper, because newspaper में जो भी content होते हैं that is very important for your exam perspective. और daily newspaper analysis section में हम यहाँ क्या discuss करते हैं? Majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. So what exactly we discuss in newspaper analysis session? We discuss about national news, international news, economic based news, sports based news, science and tech, person and news, summits and conference. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis session. And questions of the day means that we'll ask you the 5 questions that would be very important. So stay tuned till the last. और ये सारे 5 क्वेश्चन जो हैं, जितने भी 5 क्वेश्चंस होंगे वो आपके न्यूज पेपर से लिए हुए, ठीक है? तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में आपके न्यूज पेपर से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड क्विक टिप्स, और आज क्विक टिप्स में देखेंगे हम कि जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको लर्न करने के लिए विद इन 30 सेकेंड दैट वी विल लर्न द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Here is the very first article which talks about Trump offers $5 million gold card visas for US citizenship. Recently, what it happened, Donald Trump has announced plans to offer a gold card visa that can be bought for $5 million, which is 43.5 crore approximately, as a route to American citizenship. Or the proposed visa will replace the existing EV-5 visa. मतलब EV-5 visa जो है वो for foreign investors. So which grants residency to those who invest $7 crore to $1 million and create at least 10 jobs. And EV-5 program is popular among Indians with sizable investment potential. अब यहाँ पे एक और आर्टिकल जो है कुछ सिमिलर है. देखो, हाउ ट्रम्प गोल्ड कार्ड यूएस वीजा कुड वर्क, व्हाट कंसर्न इट रेजेस. अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक वीजा अनाउंस किया, इसका नाम है गोल्ड कार्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स सीकिंग परमानेंट रेसिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स and ultimately American citizenship. So we are going to selling a gold card. Trump said on Tuesday we are going to be putting a price on that card about $5 million, almost 7 crore के आसपास. So it is going to give you a green card privilege, plus it's going to be a route to American citizenship, and wealthy people would be becoming into our country by buying this card. And the scheme, the details of which would be known 2 weeks. अब यहाँ पे EV-5 वर्सेस गोल्ड कार्ड देखो. EV-5 प्रोग्राम जो था, जिसको कांग्रेस ने क्रिएट किया था वहाँ पे 1990 में, एंड उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेट करता था यूएस सिटीजनशिप को एंड इमिग्रेंट सर्विस. दैट ग्रांट्स फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, ग्रीन कार्ड टू फॉरेनर्स हु इन्वेस्ट इन अमेरिकन बिजनेस इन्वेस्टर्स must put at least $1.5 million and create at least 10 jobs for American. While details are not known yet, it appears that the gold card will not require an investment in American business or the creation of new employment. So it appears likely that USSIC, मतलब जिसका मैंने बताया आपको, US Citizenship and Immigration Service, that will administer and regulate the issuance of the gold card as well. And USCIC will likely work with the Department of State and Department of Commerce to administer the investment side of the scheme. Processing times are expected to be short to incentivize the scheme. Likely benefit to us, it could be argued that clear and simple route to residency offered by the scheme will bring high net worth individuals to America. बहुत सारे कंसर्न है इसको लेकर के कि जब भी गोल्ड का स्कीम है, that throw up several ethical, legal and political concern. The program could be seen as putting American citizenship on sale, favoring money over merit, catering to the rich at the expense perhaps of talented professionals.
क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो उसको इजीली 7 करोड़ में खरीद सकता है. And immigration programs with an investment component that can be vulnerable in the absence of strong regulatory checks to post possible money laundering and undue foreign influence. And Trump was nonchalant when asked when the program might open America's door to Russian oligarchy. मतलब जो अमीर लोग हैं उनको ही वो कार्ड मिलेगा, ऑब्वियस उनके पास पैसा होगा, राइट. Challenges क्या है? Significant change to American policy must be approved by Congress. Republican Party currently has a majority in both houses. However, not all Republican may want to accuse of selling American citizenship. Democrats that will almost certainly oppose to the proposal. In कोर्ट की बात करें तो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस हैं वीज़ा प्रोग्राम्स को लेकर के. एनपेट में जीए आती है बच्चे, ये जी आप पूछ रहे हैं. सो मोस्ट लीगल चैलेंजेस दैट जो वीजा प्रोग्राम्स है, अगर बात करें इंडियंस की यहाँ पे तो 2023 में फाइनेंशियल ईयर दैट 631 इंडियंस ऑप्टेड यूएस ग्रीन कार्ड थ्रू द EB-5 प्रोग्राम. तो EB-5 था वो यूएस का पहले का वीजा प्रोग्राम था. अब यहाँ पे गोल्ड कार्ड को अनाउंस किया गया. आई होप दिस आर्टिकल इज सफिशिएंट. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश कुमार जी. ये CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, ठीक है. सो यहाँ पे इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो पहले इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते थे? एक 3 मेंबर की एक बॉडी होती थी, दैट 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ऑल्दो ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर आर इक्वल. अब कैसे अपॉइंट होते हैं? सिंपल सा 3 होंगे इसमें. एक होंगे जो यहाँ पे सर्च कमेटी, और सर्च कमेटी को हेड कौन करेगा? लॉ मिनिस्टर. और इंडिया के लॉ मिनिस्टर कौन है अभी? अर्जुन राम मेघवाल. और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे. वो उसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा वो भी जानना इज इंपॉर्टेंट. कि यहाँ पे आपको इसमें होगा इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023. एंड यहाँ पे क्या होंगे? 3 लोग होंगे. पहला होगा पीएम के साथ होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब राहुल गांधी, और कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे पीएम, जिसमें अभी इस बार कौन थे? अमित शाह. मतलब पीएम मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह विल अपॉइंट द मतलब न्यू CEC. और ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं ये. चीफ इलेक्शन कमिश्नर वेरी फर्स्ट टाइम न्यू इलेक्शन प्रोसीजर से हुआ है, राइट. चलो, डिलिमिटेशंस एंड द साउथ. इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स delimitation after every census, but the number of seats in parliament and the share of each state has remained static since 1976. This is largely due to opposition from southern states. So Union Home Minister Amit Shah on Wednesday said that southern states would not lose even a single seat after delimitation, addressing long-held apprehension states like say Tamil Nadu or Kerala about losing representatives in parliament, and delimitation was to be carried out based on latest population data. Why delimitation? ये delimitation का मतलब क्या होता है? देखो, आपकी जो इलेक्टोरल बाउंड्री होती है ना, वो delimitation कमीशन ही फिक्स करती है. जो आपके जुडिशियल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, whatever the area you decides, वो डिसाइड करता है कौन? वो करती है होम मिनिस्ट्री. सो delimitation एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है. delimitation एक कॉन्स्टिट्यूशनल mandate है that too carried out after every census in order to readjust the number of seats in parliament and the boundaries of the constituency. Make sure ये constituency की boundary को fix करता है, not judicial boundary, based on latest population data. So the idea is to ensure that each constituency has roughly the same number of people living in it. Until 1976 तक ये क्या था? 1976 तक यहाँ पे एवरी इंडियन सेंसस सीट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की जो असेंबलीज होते हैं दैट वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री. और दिस हैपेंड थ्राइस बेस्ड ऑन द सेंसस 1951, उसके बाद 1961 और 1971. बाद में क्या हुआ माय फ्रेंड कि यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ to the constitution
passed during the emergency that froze the number of parliamentary and state assembly seats till the 2001 census. This was done so that the state with higher rates of proportion growth could implement family planning measures that without losing representation in parliament. 2001 में क्या हुआ dear friend, यहाँ पे जो boundaries थी constituency की that were altered, but the number of seats that each state had in the Lok Sabha as well as in the strength of the state legislative assembly remained the same, and this was largely due to the top position from southern states. So why are southern states nervous about delimitation? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, जो स्टेट्स हैं यहाँ पे in peninsular India feel the delimitation based on latest population data will reduce their representation in parliament and thus diminish the political heft. September 2023 में क्या हुआ? During the debate in parliament on the women reservation bill, whose implementations is linked to the delimitation process. तो उसमें जो डीएमके लीडर थी उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई एंड व्हाट इट हैपन. फिर में क्या है, आप अगर स्टेट्स में देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कितने पॉपुलेशन वाइज ईच सीट रेशियो वाज ब्रॉडली इक्विटेबल आफ्टर लास्ट डिलिमिटेशन. 1976 में सीट्स देखें, यूपी में 85 है, बिहार में 54 है, राजस्थान 25, तमिलनाडु 39 एंड केरला 20. 25 के पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार में ये 54 तक पहुंच गया. 20 लाख रेशियो में अगर देखें, 20 लाख रेशियो में ये 126 पे है. Electoral performance of two parties in past 5 elections in the state, UP में 85, Bihar 53, Rajasthan 25. So how will election be impacted? देखो, regional parties जो भी हैं साउथ के that feel that delimitation based on the populations that could skew elections in favor of parties such as the obvious incumbent BJP with the base in the northern Congress too share the anxiety. And the following in the BJP through the late 1980s and the early 90s में back up the Ram Temple movements में उसमें ये चीजें हुई थी. So of the 52 seats won by Congress in 2019, 15 came from Kerala and 8 from Tamil Nadu. Even in 2004 में when it had won 145 seats, majority of the victory had come from South India with 29 from Andhra Pradesh, जिसमें कि आपका तेलंगाना भी इंक्लूड था उस टाइम. एंड इन 2009 व्हेन इट वॉन अगेन आंध्रा रिमेन्ड 33 सीट्स. तो साउदर्न स्टेट्स का अच्छा रोल है इन टर्म्स ऑफ अगर डिलिमिटेशन से साउथ के साइड में जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी प्रोपोर्शंस बहुत कम हो जाएगी. व्हाट इज द अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट? हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्बिशियस 3,858 हेक्टेयर्स अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को Gurugram and Nu, which one of the poor promises of the ruling Bharatiya Janata Party last year. ये प्रोजेक्ट है क्या? Aravali Safari Park will have animal cages, guest house, hotels, restaurants, auditorium and animal hospitals, children park, botanical gardens, aquarium, cable cars. ये सारी फैसिलिटीज होंगी. So why is there opposition? देखो, जो हिल है southern district of Gurugram and Nu are a part of Aravali and the oldest full mountain range in the world. It runs diagonally across Rajasthan, extending from Champaner, जो गुजरात में है, and southwest to near Delhi in the northwest for about 690 किलोमीटर का. तो इससे क्या होगा कि जो डेजर्ट है that towards eastern Rajasthan and perform the role of an aquifer will highly fractured and weathered qualities rocks हैं that allowing water to percolate and recharge the groundwater. So it is also a rich habitat to wide spectrum of wildlife and plant species. और बस जो wildlife species हैं उसके लिए ये अच्छा है. तो अगर आप इतने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाएंगे, होटल्स और वहाँ पे पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, उससे वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी. और अप्रॉक्सीमेटली 80,000 हेक्टेयर्स और अरावली हिल का जो एरिया है वो हरियाणा में है. And majority is protected under various laws and by orders of Supreme Court and National Green Tribunal. And most widespread protection
to the Aravali comes from the Punjab Land Preservation Act LLPA 1900. नाउ ये आर्टिकल नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, इसमें फीमेल्स स्पेंड 201 minutes more than males in unpaid household work time use survey. Even as the time spent by the females in a day on unpaid domestic services for household members reduced by 10 minutes to 289 minutes in 2024. बाकी सब में कंपेयर करें तो फीमेल ऑल्सो स्पेंड 62 more minutes in a day in unpaid caregiving activities for household members than males. तो जो मेल हैं वो तो कमाने में है, पर जो हाउस वर्क्स है, हाउस होल्ड वर्क में मेनली कंट्रीब्यूशन इज फीमेल. It's you asking which is the best BBA or BCom. It depends on your interest, AG, कि आपका इंटरेस्ट BBA में है और BCom में है, राइट. आपका इंटरेस्ट बट प्रोफेशनल कोर्स है BBA, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू डू BBA. But if you're more interested or inclined towards BCom, that you can pursue. Share of unpaid household works जो है that for female is 59 years, that remain high as they spend 305 minutes in such work in 2024. अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है. What a government study reveals about the state of our panchayats. कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला जो है टॉप में है ये पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे आपके ऊपर. यहाँ पे जो है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये उसमें which state having a top position in पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स. सो 2024 में इंडेक्स दैट हैज बीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पब्लिश किया, जिसमें कि IIPA का रोल था. IIPA मतलब माय फ्रेंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज I'm also interested in finance. So which university would be best for it? ये जी आप फाइनेंस के लिए इंटरेस्टेड है तो आप BCom तो फिर सही है, BBA सही है आपके लिए, और BFA बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. रेस्ट आप प्रथम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दे विल गिव यू द इंटायर इन्फॉर्मेशन. आपको यहाँ पे PPT में भी यहाँ पे ये नंबर दिख रही होंगी, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है ये, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं. एंड शुड आई डू एनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक CFA, FRM? या यू कैन परस्यू, दैट्स नॉट एन इशू. शॉर्ट टर्म के कोर्सेज भी हैं वो, दैट यू कैन ऑल्सो परस्यू इन दैट. सो यहाँ पे जो पंचायती राज है, IPA ने डेवलप किया पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स दैट इज स्कोर्ड स्टेट ऑफ 0 से 100%. और ये जो इंडेक्स है दैट वाज published in 2014 over the past decade, और नेशनल एवरेज जो है वो 39.92 है. ओके, यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड विद प्रथम. ओके, डू वन थिंग, आप PSIS पे क्वेरी रेज कर दें कि दैट आई जस्ट वांट टू नो फाइनेंशियल कोर्सेज एंड आई वुड लाइक टू परस्यू, तो आप यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे नेशनल एवरेज जो है प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का वो 46.44% है. और इंडिपेंडेंट स्टडी ये बताती है कि जो कंसिस्टेंट फंडिंग है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है अमंग द बिगेस्ट चैलेंज फॉर फेसिंग पंचायत. 2023 और 2024 में यहाँ पे गवर्नमेंट एलोकेटेड 47,018 crore टू पंचायत अकॉर्डिंग टू स्टडी, बट ओनली 10,761 crore was released on November 2023. तो सबसे टॉप पे जो 3 स्टेट्स हैं, तीनों साउथ के स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. ये पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पे हैं. पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पंचायत के पास. फ्रेमवर्क होना चाहिए, लाइक whether the basic provision mentioned in the constitution are adhered to by the state. फंक्शन होनी चाहिए, मतलब उसमें जो मेजर्स हैं कि हाउ पंचायत फुलफिल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें. फाइनेंस, द एफिशिएंसी इन द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स ऑफ पंचायत. फंक्शनरीज होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. द फ्रेमवर्क
in a place to audit and monitor the functioning of panchayat. In next article talking about internet shutdowns, highest in 2024 globally, India tops in government order curbs. India did not impose the highest number of internet shutdown last year, with Myanmar seeing with additional disruption that in 2024 सबसे टॉप पे जो है वो है म्यांमार. Fewer shutdowns happened in India in 2024 than in the previous year. People in 16 states and union territories experienced a shutdown. स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑब्वियस मणिपुर में क्लैश हुआ था, अभी वहाँ प्रेसिडेंट रूल है. मणिपुर में 21 टाइम्स, हरियाणा 12 टाइम्स, जम्मू एंड कश्मीर 12 टाइम्स, टॉपिंग द लिस्ट ऑफ offenders in India. So out of 84, 41 shutdowns were related to protesters, 23 that were related to communal violence, or in all 296 internet shutdowns happened globally in 2024. A report found that India's cumulative 84 curbs accounted for 28% of these. 85 were imposed in Myanmar. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Myanmar is in top position 85, and then India, then Pakistan, Russia, Ukraine, Palestine, Bangladesh, Iraq, Jordan, and Sudan. Fewer shutdowns happened in India in 2024 that in the previous year. India imposed 5 examinations that related shutdown ahead of key exams in 2024. Up next article, यहाँ पे USAID that funded 7 projects in India in financial year 2024. यहाँ finance ministry that report US agency funded project $750 million का that related to agriculture, food security, water, sanitation and hygiene, disaster management, health and renewable energy. Currently यहाँ पे 7 project है with a total budget of $750 million approx are being implemented by USAID. Moving further, अब यहाँ पे देखते हैं क्विक टिप्स. क्विक टिप्स में क्या है, यहाँ पे क्विक टिप्स में देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसको आप लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. T stand for territory, E stand for emoluments, फिर affirmation and oath, राज्यसभा, schedule areas, other schedule areas, federal provision, official language, land reforms, defection, panchayat and municipalities. Now we move to the questions of the day. ISRO launched its 100th mission using which rocket? PSLV C-55, GSLV F-15, GSLV Mk-3 and SSLV D-2. So the right answer should be here is option B1. Moving further to the next one, who has been recently appointed as 26th Chief Election Commissioner of India? Rajiv Kumar, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा. कौन सा राइट आंसर है? जस्ट अभी मैंने आपको आज के ही न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में we discussed कि हमारे इंडिया की कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. So obvious the right answer is here Gyanesh Kumar. B is the right answer. The new income tax bill 2025 is expected to come into effect on April 1, 2026 that will replace which existing law? Wealth Tax Act 1957, Income Tax Act 1961, Direct Tax Code 2010 and GST Act 2017. The right answer is option B, Income Tax Act 1961. Here the fourth question is here. Which country has announced plans to build the first deep water space station in the South China Sea? Japan, United States, China and Russia. Here we have 4 options. Try to find it out the right answer. So the right answer is China. So China ने ऑफिशियली
यहाँ पे डीप सी रिसर्च फैसिलिटी क्या इन साउथ चाइना सी and is an important step for both scientific exploration and geopolitical strategy. और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, where will the Olympic Sports Games 2027 be held? Tokyo, Riyadh, Paris, Los Angeles. You can write your answer in the comment section. Where will the Olympic Sports Games 2027 be held? The right answer is option B would be the right answer, Riyadh. So the first Olympic Sports Games will be hosted in Riyadh in 2027, 2 years later than expected after 12 years deal with Saudi Arabia. और यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये चीज़ वहाँ पे ट्यूसडे को बताई. So this is all about the session, dear student, and I hope that you enjoyed our session a lot. If you have any questions regarding this YouTube session, please let me know in the comment section. And if you are new in this channel, please subscribe our channel. और ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन जो है वो मंडे से फ्राइडे के बीच में होती है at 11:30 लाइव, where we discussed each and important events of the Hindu and Indian Express. इसमें हम और questions भी डिस्कस करते हैं. So will that will give you the idea कि इसमें किस किस टाइप के questions होते हैं. So we'll meet you in the next YouTube analysis session. Till then, bye bye and take care. Thank you so much for joining with us. Thank you so much, AG, and we'll meet you in the next YouTube analysis session. Bye bye and take care once again.